Hi, so let's do a quick market analysis. अभी Thursday market में strength है and today on 26th of October around about at 11:30. So हम जाके थोड़ा सा सर्च करते हैं कि कौन कौन सी अच्छी trades वहाँ पे है. So let's start with financials. So we are going to first do a very quick look into the financials and all the sectors and then Nifty 50. So चोलाफिन में बहुत तगड़ी बाइंग आई है एंड इट्स रियली गोइंग गुड गोइंग फॉरवर्ड. अगर ये 600 के ऊपर क्लोजिंग देती है सो दैट वुड बी एन ऑसम ट्रेड. एंड ऑल्सो बैंक ऑफ बड़ौदा भी 100 क्रॉस कर चुकी है. दिस वाज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. एंड पीएनबी एक्चुअली 49 के ऊपर भी है. हम देखेंगे एयू बैंक 1200. इट वाज अ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट विच हैपेंड एंड दैट एक्चुअली हैपेंड ऑन लास्ट फ्राइडे और वो हमने वीकेंड में डिस्कस किया था. अभी ये 1250 के ऊपर भी चली गई थी. सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड. मन्नापुरम भी 200 में अच्छी सपोर्ट मिल रही है. दिस इज गुड. सो बिटवीन 200 एंड 220 कैन बी वेरी मच बी अटेनेबल. और ये सब डिपेंड करता है. आज बजाज फाइनेंस की रिजल्ट आने वाली है. सो लेट्स सी एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम हैविंग some Bajaj Finance positions. So Bajaj Finance is around about trading at 7800 right now और इसकी all time high 8000 levels में है. So basically let's see अगर रिजल्ट के बाद कुछ अच्छी मूव आई just like ICICI Bank. Other than that there is not much happening. CUB कल हमने डिस्कस किया था 180 is actually a very strong resistance, but the good thing is it can dip towards 175 जहाँ पे इसकी बाइंग आई है. now it's going towards 180. so generally हमने इसमें 169 का एक resistance था जहाँ पे हमने अपना positions बनाए थे and from there it went towards 178 yesterday जहाँ पे हम अपना positions close कर चुके हैं. so let's see इसके बाद ये क्या होती है. Canara Bank also made 52 week high. So we have already discussed अभी इसका 222 is a good target for the short term. So other than that HDFC भी अच्छी चल रही है. So it's around about at 2920 and ICICI GI. Okay, so actually there's not much of a trade. अच्छा, तो अगर हम वीकनेस देखें तो मुथूट फाइनेंस 1600 हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट था. उसके बाद नाउ इट्स एक्चुअली कमिंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स 1500. इट सीम्स लाइक देयर इज़ अ वीकनेस. कोटक बैंक में वीकनेस है. सो बेसिकली ऑल टाइम हाई रीजन्स में इसमें एंड ऑल्सो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक. एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जितने भी टॉप नॉच प्राइवेट्स एंड ऑल्सो यू कैन सी इंडसइंड बैंक ऑल्सो. सो जितने भी टॉप नॉच प्राइवेट बैंक्स जो इतने दिन चल रही थी टुडे दे आर नॉट एबल टू वर्क. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट वी आर सीइंग दैट there are short positions getting added especially in ICICI and Axis, and let's see if they are able to reverse. and ICICI में अगर 840 के ऊपर क्लोजिंग आई एंड टुगेदर विद दैट अगर एक्सिस बैंक का भी 840. सो बेसिकली बोथ ऑफ देम अगर 840 में के ऊपर क्लोजिंग दे पाई सो वी वुड बी ट्रैकिंग दैट. एंड अदर देन दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज यूजुअल मेड ऑल टाइम हाई टुडे एट 516. सो लेट्स सी इसमें भी कुछ पोजीशंस बन रही हैं. लेकिन आई थिंक फ्रॉम रिवर्सल ट्रैकिंग ऑफ कोर्स आई थिंक 1 or 2 days शायद ये private banks में कुछ booking आए. Okay, let's have a Tata Motors is again at 500 and it seems like there are positions which are getting added. Let's say अगर ये 500 के ऊपर closing देती है that would be a good closing. आयशा मोटर भी आज उसके एमडी के न्यूज़ के चलते चल रही है. बट मेरी पोजीशंस एस्कॉट्स में है एंड एस्कॉट्स अभी 1520 तक गई थी. एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स एस्कॉट्स का ऑल टाइम हाई है 1562 और इसकी रिजल्ट्स भी इस वीक आने वाली है एंड वेरी मच पॉजिटिव. और हमारा 1600 का टारगेट अभी भी वैलिड है. अशोक लेलैंड का 140 और 136 के बीच में ही अभी कुछ दिन रहेगी. एंड सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेड्स विच यू कैन बी इंटरेस्टेड इन करंट ट्रैक. बजाज ऑटो इसमें कुछ सॉरी स्ट्रेंथ है नहीं. इन जनरल बजाज ऑटो, हीरो मोटो ये चल नहीं रही है. M&M का 900 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर नाउ एंड 880 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. सो अभी हमको देखना है कि किस तरफ से ये ब्रेकआउट देती है. लेट्स डू सीमेंट सेक्टर वाइज. somehow cements are able to at least do some performance today. 1% सभी दे रहे हैं. Other than that Ambuja is the only one which is down. So at least for now I think cement is more of no trade sector.
UBL भी बहुत अच्छी एक दी है, मैकडबल अच्छी मूव दी है, मैकडबल की रिजल्ट शायद आ गई है या आने वाली है, जो भी इस वीक में मैकडबल की रिजल्ट थी. Titan B 2% move कर रही है. Seems like there are positions which are getting added in Titan, so keep a watch on that. Other than that, जो भी FMCG सेक्टर में आज थोड़ी सी बाइंग है, एंड सो दे आर स्टिल एबल टू. सो ITC में मेरा व्यू है कि very soon it should be going more towards the levels of 220 215, और अगर ये 250 के ऊपर क्लोजिंग देती है डेफिनेटली हम फिर अपना पोजीशंस बनाएंगे, ट्रेड करेंगे. Godrej consumer products, in fact you can see Britannia, Hindustan Unilever, and these are all coal pal also. Just 2-3 sessions के पहले ये 1700 में थी, now it's lingering at 1500. Dabur, Havels, all of them are down, so actually FMCG is also. So अभी तक हम जितने भी देखे हैं, okay, emphasis on every of this IT companies, you can see all this profit booking which has happened, and this is exactly what we took advantage of in the morning. हमने अपना जितने भी mid cap LTI, say for example LTI 6600 तक चली गई थी, and now it's below 6500. So these were few of the trades which we took in the morning, and going forward रीज़न यही थी कि हम जानते थे कि द प्रॉफिट बुकिंग विल कम एट हायर लेवल्स, एंड मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, एंड यू कैन सी दिस इज द सेम स्ट्रक्चर इन एवरी वन ऑफ देम. द गुड थिंग इज टिक महिंद्रा आफ्टर द रिजल्ट इट्स 5-6% अप, एंड दिस इज एक्चुअली गुड. नाउ वी हैव टू सी इसकी कंटिन्यूएशन कैसे होती है, एंड गोइंग फॉरवर्ड अगेन दैट वुड बी इंटरेस्टिंग ट्रेड फॉर अस. Okay, and now let's do a quick steel sector में Tata Steel is between 1300. There's not much. Jindal Steel 430. Tata yes, as a steel sector में ऐसा कुछ है नहीं other than National Alum and Vedanta. Somehow I am seeing there's a lot of buying interest in Vedanta, and I really don't know why. मैं स्टील सेक्टर में अभी नंबर 1 परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न वेदांता ही दे रही है. But for me, I'm more interested in Tata Steel, and so let's see how Tata Steel and Hindalco भी 480 में अच्छी एक. So Hindalco could be one of the companies जहाँ पे हम अपना पोजीशंस बना सकते हैं. Going forward 500 is a good target, and right now it's at 480. So nearly हमें 4-5% की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है in short term. Biocon में भी lower levels 320 में एक सपोर्ट आ रही है, but for me I would suggest कि try to buy and hold this for longer term, and don't go for this small moves which are coming. Auto Pharma में भी कुछ move है, and Cipla कल ये 913 तक गई थी, एंड आज भी वो सेम लेवल्स पे जाके रिवर्स की है, एंड इट सीम्स लाइक देयर इज स्टिल सम प्रॉफिट बुकिंग विच इज़ हैपनिंग. डिवीज लैब भी 5000 के लेवल्स पे है, सो देयर इज़ नॉट मच. सन फार्मा भी 800 की तरफ आ रही है. डॉक्टर रेड्डी का भी 5000 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. So this is how Torrent Pharma, actually yesterday we got a very good trade, and today again we are going to get a very good trade. Just try to keep a radar on this one. It can reverse very well from here, so Torrent Pharma would be one of the companies जिसको हम अपने radar पे रखेंगे for a trading perspective. अभी trend wise हम देख चुके हैं, and there is nothing much we can. Metropolis में भी एक अच्छी move है. PVR भी बहुत अच्छी 2% मूव दी है on the top of yesterday's move. So yesterday ये 6-7% चली थी, and that was a good trade we took. So these are a few of the companies जहाँ पे positions अभी बन रही हैं, but you know it would be much more complicated for you. So let's do a quick view of Nifty 50. So Tech Mahindra and Tata Motor, these are the two biggest drivers. 5% types up है. The third one is Tata Steel and Hindalco, and Bajaj Finance of course इसकी रिजल्ट आने वाली है. SBI Life, UPL. So this is, and other than that सीमेंट सेक्टर आ जा रही है. FMCG में सिर्फ Titan is the only one which is surviving. Let's see, and banking में State Bank of India is the. So banking or financials में Bajaj Finance and State Bank of India, these two are good. Reliance is 2600, or Reliance is actually gone. जब तक 267080 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, there is absolutely not going to be any significant strength in Reliance. Of course this is my view, and I can be wrong, but I am 100% sure I won't be wrong. So let's see. Okay, और वीकनेस है इन सब कंपनीज में
where you can see there's a profit booking happening in FMCG sectors, just like you have Britannia, Hindustan Unilever, these are down, and private banks, IndusInd, Kotak, Axis, ICICI, these are, and HDFC Bank is down. So in general, it's more like, अगर profit मिल रही है तो लेके भागो, and this is exactly the reason why in the very first 30 minutes in 1 hour I booked out all the profits, all the positions which I've created earlier, and I knew that just like in IR, CTC, IEX, everywhere. And let's see the closing. Agar closing may is able to hold, and I'm also very much happy to make more positions, new positions, if it's able to hold till the end of the day. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you in understanding how Nifty is working. In general, Nifty में जो banks चल नहीं रही है, लेकिन उसको counter करने के लिए कुछ companies चल रही है. In general, I would suggest that the whole ball game is right now in the hands of State Bank of India and Bajaj Finance, and definitely Tata Motors, Tata Steel, and Tech Mahindra. Thanks a lot for listening. Bye bye.